आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं साजाद जी, ठीक है? सर बहुत बहुत अच्छे हैं सर, आप बताएं कैसे हैं सर? ठीक है। तो इन द केस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट यूनिट 6 का हम लोग जो है सिलेबस कर रहे थे, उसमें जी सर। पार्टनरशिप का हम लोगों ने लिया हुआ था। उसमें जो सिलेबस है, इंपोर्टेंस ऑफ द सप्लायर्स, सिलेक्शन, सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, वेंडर रेटिंग सिस्टम। वेंडर रेटिंग सिस्टम हम लोगों ने कर लिया। उसमें PDCA फॉर द मेजरमेंट, जी सर। परफॉर्मेंस मेजर डिजाइन एंड द BSc बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में कल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी विल जी डिस्कस सर। अबाउट द PDCA फॉर मेजरमेंट, प्लान डू चेक फॉर द मेजरमेंट, PDCA फॉर द मेजरमेंट, है ना? तो ये आपको प्लान डू चेक एंड एक्ट, PDCA साइकिल है, PDCA मेजरमेंट्स है। पहले प्लान कीजिए, फिर उसके बाद काम कीजिए, फिर चेक कीजिए, फिर एक्ट कीजिए, है ना? ये आपको PDCA किसी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके काफी बेनिफिट हैं। यही PDCA साइकिल है आपका, प्लान डू चेक एंड एक्ट साइकिल है आपका, है ना? इसमें आपको जी सर। केस स्टडी भी आपको बताया जा रहा है, और ये सारे आपको कैसे प्लान डू चेक एक्ट कंपनी में स्टैब्लिश करेंगे, वही हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे, है ना? तो जी सर। PDCA is an iterative 4-step quality improvement and the management agile process typically used for the better of the business strategy। किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी को बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए PDCA आपको काफी इंपोर्टेंट है। PDCA is a successive cycle which starts off small to test potential effects on the process, but then gradually leads to the larger and more targeted change। Plan, do, check, act are the 4 components of the workbench in the software testing. However, diverting from the exact essence of what concept primarily applies to, we shall be using the concept more towards achieving the individualistic goal, which will finally lead to a bigger picture enhancement and improvement, rather than applying this to the process itself directly. Though the method is applicable to process, business and organization as generally utilized by the industry, but this is an attempt to try and adopt the same at an individual level to bring the productive improvement in individuals, which will trigger a improvement in process and quality for the organization at the bigger level. The concept itself suggests that the small baby steps initially would one day lead to the bigger marathons in the future. So the logic is customized to see how this method would help an individual to become more accountable, which will ultimately enable a group, a product line, and an organization to be able to make a difference in improving the overall quality. Every individual has a root way of leading life, both professional and personal, and adopted by the PDCA concept. He can excel in ensuring the daily goals are accomplished effectively, which will help them to come back to the fresh and the next day start working on the newer creative activity rather than trying to catch with the previous day's backlog. The method tries to bring in changes to the traditional ways how an individual does an activity, and with the few improvements, the overall productivity can be increased that will ultimately benefit the organization. Once the method is applied to an individual for making them more productive, as we shall then apply the same to a group, product line, and organization to replicate the success story for the positive growth and the development. The concept, what is the concept of the plan, do, check, and act? In case of the plan, establish the objective, establish the mission, establish the goal of the company. What is the goal of the company? What is the mission of the company?
what is the objective of the company, and process necessary to deliver results in accordance with the expected output, the target or the goals. By making the expected output the focus, it differs from the other techniques in the completeness and accuracy of the specification is also part of the improvement. Do implement the new process. Always think for the innovative process. Always think for the new process. This is essential. The Ford company, Toyota company, always implementing new process in his company. Toyota, you can read the book of the Toyota New Way. Ye new process is essential so that improvement can be done. Often on a small scale if possible to test possible effects. It is important to collect data for charting and analyzing for the following check step. Check, measure the new process and compare the results collected in the do above against the expected results at targets or goal from the plan to ascertain any differences. Charting data can make this much easier to see trends in order to convert the collected data into information. Information is what you need for the next step is the act. You have to be check. आप उसको चेक कीजिए जो आपने किया उसका क्या इफेक्ट्स रहा, what policy you have adopted उसका इफेक्ट क्या रहा, and then analyze the differences to determine the cause. काउज को सर्च कीजिए, व्हाट आर द रूट काउजेज ऑफ द फेल्योर्स आर देयर. एक बार में कोई जो है विजय नहीं हो सकता है, एक बार में कोई जो है आपको कोई सिकंदर नहीं हो सकता है. तो आप अपने रूट काउज का पता कीजिए. व्हाट आर द रूट काउजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ द कंपनी, व्हाई द कंपनी इज गोइंग टू बी सिक. ये आपको इंडियन कंपनीज में आपको ज्यादा एनालाइज करने का, इंप्लीमेंट करने का आपको जरूरी है कि भी पब्लिक सेक्टर क्यों फेल हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, उसके रूट काउजेज क्या है. तो ईच विल बी पार्ट ऑफ द अदर वन और मोर ऑफ द PDCA स्टेप. Determine where to apply changes that will include improvement. When a pass through these 4 steps does not result in the need to improve, refine the scope to which the PDCA is applied and until there is a plan that involves improvement. And the approach, a fundamental principle of the PDCA is iteration. Once a hypothesis is confirmed, executing the cycle again will extend the knowledge further. Repeating the PDCA cycle can bring us closer to the goal, usually a perfect operation and the output. Implementation, PDCA should be repeatedly implemented in the spirals of the increasing knowledge of the system that converge on the ultimate goal. Each cycle closer than the previous one can envision and the open coil spring, which with each loop being the cycle of the scientific method PDCA. And each complete cycle indicating an increase in our knowledge of the system under study. This approach is based on the belief that our knowledge and skills are limited but improving. Especially at the start of the project, key information may not be known. The PDCA scientific method provides feedback of justify our guesses, hypotheses, and increase our knowledge rather than inter-analysis paralysis. To get it perfect at the first time, it is better to approximately right than exactly wrong. With the improved knowledge, we may choose to refine or alter the goal. Certainly, the PDCA approach can bring us to closer to goal we choose. Rate of the change, that is the rate of the improvement. You can decide the rate of the improvement by the various statistical technique. What improvement can be done in the department, in the person, or in a country by the statistical technique. Key comparative factor in the today's world, PDCA allows for the major jumps in the performance. PDCA को आप अप्लाई करेंगे तो आपके कंपनी के परफॉर्मेंस में मेजर जंप होगा. ब्रेक थ्रू ऑफ डिजायर्ड इन ए वेस्टर्न अप्रोच as well as Kaizen, frequent small improvement. In the United States, a PDCA approach is usually stated with a sizable project involving numerous people's time, and thus managers want to see large breakthrough improvement to justify the effort expended.
However, the scientific method and the PDCA apply to all sorts of the projects and improvement activity. PDCA at the IT company. Global IT company are several processes, method, and technique which are adopted and implemented to come up with a high-level quality product which meets and exceeds the customer expectation. To meet the customer expectation, to need the quality product, it is essential. It is essential. And the PDCA approach at the goal IT company at a higher level can be adopted and applied at the 4 different levels as classified below. ये 4 लेवल्स आपको दिखाए गए हैं. 4 लेवल आपको आईटी कंपनी में, आपको इंडिविजुअल लेवल, प्रोग्राम लेवल, प्रोडक्ट लाइन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये आपको 4 लेवल्स आपको पीडीसीए के वो आपको दिखाए गए हैं. ये आपको कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए ये आपको जरूरी है. ईच एसोसिएट कैन इनकॉर्पोरेट पीडीसीए टू कंप्लीट डेली एक्टिविटी. Program level, each program can adopt PDCA for the sacrum and non-sacrum based program. Product line level, each product line can analyze its goal by the periodic use of the PDCA concept. Organizational level, the company as a whole can review its overall performance from time to time. The idea is to first successfully adopt the PDCA concept at the first 2 levels to begin with, that is at the individual level and the program level. Based on the successful implementation at these 2 levels, the implementation can later be applied at the product line level and organization level to ensure that we achieve a holistic improvement from the base to the top, ultimately making a difference to the company's overall yearly objective, targets, financial goals. कंपनी के अंदर फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और टारगेट्स होते हैं. कैसे जो है ज्यादा फाइनेंस अचीव किया जाए, यही मोटो रहता है हर एक कंपनी का. हाउ टू अचीव द फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल टारगेट, है ना. तो जो आप फाइनेंशियल गोल जो आप ऐसे एसेस करेंगे, उसका मेन मकसद है मीट टू द एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है उसको मीट करना है और उसको एक्सीड करना है, तभी आपका फाइनेंशियल गोल आपको अचीव होगा. नहीं तो फाइनेंशियल गोल, टारगेट जो है, ऑब्जेक्टिव है, अचीव नहीं होगा. वो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी जब तक कि कस्टमर उसका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेगी. क्वालिटी इज द किंग, क्वालिटी इज द किंग. दिस इज एन मंत्र ऑफ द सक्सेस एट द टेक्नोट्रिक्स मूव टुवर्ड द पीडीसीए मेथड. क्वालिटी पे आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा. क्वालिटी इज द किंग. जब तक आप क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कस्टमर आपको सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो तब तक जो है आपका जो है काम आपको नहीं बनेगा. PDCA method would definitely help in a great way in the successful implementation of this mantra. PDCA at the individual level. Each associate in an IT company, the individual usually has the 8-hour work schedule from the down to dusk at the 5 days week. The actual productivity would be around 6.5 hours average, considering the loading factor and various other interruptions. These 6.5 hours average of work is the core and crucial time in conceptualizing and realization of the great products for the organization. We can find some example of the PDCA being adopted in the same areas around us in the sum of the work products that we develop. Example, when a software defect is submitted in the bug tracking tool, we plan the resolution of the defect, resolve the defect, and finally verify the close the defect. This completes and closes the loop of the particular defect. However, it has been observed that there is a need to adopt the PDCA at an individual level. For the every person in the working in the company has to be adopt the PDCA. Plan your strategy of doing, then do that work, then check, then analyze. इंडिविजुअल लेवल में आपको PDCA आपको लगाने की जरूरत है to continuously improve one's effectiveness and ability to achieve and deliver daily goals. An efficient and effective way of the PDCA implementation at an individual level is explained below for each associate
to incorporate. Plan, do, check, act. Check mails first as soon you log in your PC. Read the understand activity that you need to perform on that day. Note down the task that you need to work on that day. Prioritize each of the tasks identified. Do start working on the task identified and prioritize in the above plan. Each task has to be completed to its logical conclusion with high accuracy and the quality. Complete each task first preferably. Check, verify the results by comparing the plan and do phases. Plan is expected out and do is the actual output. Identify the differences in the actual output and the expected output. Analyze the differences as found in the above check setup. Determine where to apply the changes for the improvement. Finally, apply the changes which will result in the elimination of the differences. The result of this act will be a highly productive work with good quality at the end of the day. The PDCA cycle can be implemented effectively by each individual through a PDCA daily goal chart, which is simple Excel file based plan used to ensure that all the stages of the PDCA are captured, tracked, closed, and later used for developing a better plan for the next day. This is the PDCA daily goal chart, general PDCA chart. Task identified based on the priority for the day. Priority 1, priority 2, priority 3 there. Task identified between the 9 a.m. to the 10 a.m. Mention the task has to be priority, then do. Task worked on. Mention the task completed here based on priority. Then status check at the 6 p.m. Done or not done. Act for the improvement. Mention the lessons learned here while completing the task is applicable to both done and not done. This data help in a better plan for the next day. This is the PDCA cycle. Plan, do, check, and act. This is the PDCA cycle. Plan, do, check, act. This is the PDCA cycle. And the case study of the before the PDCA. John is a software quality engineer at the IT company. He works from the 9 a.m. to the 6 p.m. every day before he is still unsatisfied with the work completed at the end of the each day and goes home worried every day. है ना? वो काम करता है लेकिन वो unsatisfied रहता है with his work completed and each day goes home worried every day. He is not able to achieve the tasks that are assigned to him to be completed on that day due to the various reasons and often carries the backlog to the next day. Every day there is a pile of the task. And a pile of the task is there every day. Both backlogs and the new tasks. Backlog tasks and the new tasks. बच्चों के साथ भी आपको इंजीनियरिंग में यही हो रहा है. पीछे का भी पेपर है और नया भी पेपर है. वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे. बीटेक निकाल ही नहीं पा रहे. पता चला 6 सेमेस्टर में आ गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पेपर अभी क्लियर नहीं है. तो उनके साथ भी यही हो रहा है. बैकलॉग्स हैं पीछे के और न्यू टास्क जो है न्यू पेपर 8 पेपर आपके नए सेमेस्टर के आ गए हैं. Which is the causing him to spend extra time in office beyond the 6 p.m. which sometimes would be stretched into the 9 p.m. He is concerned that this trend will result in less productivity, finally leading to a performance issue affecting his overloading at the end of the year. This is also affecting his family as he is now spending less time with his family during the weekday. In this situation, PDCA would greatly help in ensuring the following. John works from the 9 a.m. to the 6 p.m. every day, but is able to complete the task within this time frame. John is now clear on what he has to do every day. John is able to identify and prioritize the task effectively. John is able to deliver high quality work at the end of the day. No backlogs carried to the next day. Can spend good quality time with his family after office hour. These are achieved by the following method by the John. Plan. Check his emails first in the Outlook
as soon as log into the PC, reads and understand the activity that need to perform on that day. Note down the task that needs to work on that day observed below. Verify the response to the dog, test for the feature, update the UI function test scripts or the trigger subsystem, perform install shield testing application, provide training to the team, prioritize each of the tasks identified, update UI function test script for the trigger subsystem, test the SBI feature, provide training to the team, verify and respond to the done, perform install shield testing for the done, do start working on the task identified and prioritize in the above plan, complete easy task first preferably, update and UI function test script for the trigger subsystem, test the SBI feature, provide training to team on the NPP 440, verify the CR123 and respond to drug, perform install shield testing for the drop appear, check verify the results by comparing the plan and the do phases, install shield testing for the took longer time than expected, training to team could not be completed in 1 hour since he had lots of the question that extended the training time by another 15 minutes. Act plan install shield testing as a more higher priority task next time since it's more based on the above check step. Plan one more era round training session since then the plan training expected with the 1 hour. This is the PDCA daily goal chart of the zone. PDCA chart of the zone is shown here. Task identified based on the priority of the date. Priority दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5. Plan दिया हुआ है. Task identified between them. Update the UI function test script for the trigger subsystem. Priority 2, test the SBI feature. Provide training to team on the NPP. Verify and respond to Doug. Perform install testing of the. Do task work done. Update UI function test script for the trigger subsystem. Test the SB feature. Provide training to the team. Verified and responded to Doug. Perform install shield testing for the Doug application and check done. And all works are done. Then the improvements, here is the none. Plan second round of the session since the training time stretched beyond the 1 hour. None work on this system on a much higher priority since it took longer time to complete. है ना? इस तरह जॉन जो है आपको पीडीसीए साइकिल अडॉप्ट करके अपना परफॉर्मेंस, अपना प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा लेता है. Hence, this PDCA is required for the every manager and the every person of the Indian SME and the public sector. वो अपना पीडीसीए बनाए और पीडीसीए बना करके अपना काम फंक्शन करे तो निश्चित रूप से उसको जो है सफलता मिलेगी. In a realistic scenario, the task that we need to perform will appear even during the middle or end of the day. So whether task we identify in the beginning of the day may or may not be the only task to perform at the end of that day. In such situation, we need to insert the new task in the plan column by setting an appropriate priority level. New tasks that are assigned to us in the later half of the day. Similar to the requirement creep in the middle of the product life cycle and needs to be evaluated and can be later leveled as cannot be performed today. And such tasks need to be planned in the next day's chart. Then the PDCA at project level. Each program or a project in an IT company usually has a duration of around 4 to 6 months, depend on the customer requirement and the technology. However, due to various factors which are not in control of the team, the release dates move in or out further. The pulled in are always beneficial, but the dates moving out sometimes may hurt the overall business objective. Using the PDCA method, we can ensure that the review and analysis is being done continuously at shorter milestone and corrective action is being taken at the regular interval to be able to apply the learning for the next goal. With the adoption of the SECRO method, it has become
much more easier to achieve our objectives on the schedule, and we also have a product ready at the end of the each sprint, which will help us in meeting the requirements as per the schedule estimate. The following concept can be applied to the projects, be able to ensure and continuous improvement is planned and adapted effectively. Plan, understand all the customer requirement and break down into the phases. कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है, कस्टमर क्या चाहता है ये जानना जरूरी है. कस्टमर से ही मनी आएगा. Break down into the phases. Prioritize each of the requirement identified. Come up with the schedule estimate with risk on accomplishing the goals. Identify the resources required for the implementation. Do start working on the requirement identified and prioritize in the above plan. Each requirement has to be implemented and completed to its logical conclusion with high accuracy and quality. Implement each requirement first briefly. Check, verify the results by comparing the plan and the do phases. Plan is expected output and do is the actual output. Identify the difference in the actual output and the expected output. Verification, validation, review, and testing, etc. can also be used to ensure correctness of the work product. From Scrum-based project, the analysis needs to be in at the end of the sprint. Then act. Analyze the differences as found in the above check step. जो आपको चेक स्टेप में मिला उसको आप एनालाइज कीजिए. Determine where to apply the changes for the improvement. कहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता है वहां पर आप अप्लाई कीजिए. Finally, apply the changes which will result in the elimination of the differences. The result of this act will be highly productive work with the good quality at the end of the day. If the process is successfully, the method can be standardized and applied for the next cycle as a best practice. You can standardize the method. Standard करना मास प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है. आप पर्सन को स्टैंडर्ड कीजिए, मशीन को स्टैंडर्ड कीजिए, प्रोसेस को स्टेप्स को स्टैंडर्ड कीजिए. स्टैंडर्डाइजेशन से बहुत सारे कॉस्ट आपको रिड्यूस हो जाते हैं. स्टैंडर्डाइज करना आपको जरूरी है. एंड देन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट साइकिल एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस. If the process is not successful, then the root cause analysis can be done to take the corrective action. आप root cause analysis कीजिए for to take the corrective action. Use the output to again plan the right things as an input to the next cycle of the planning. ये आप उसको act कीजिए. This is the PDCA cycle for the measurement. ये आपको PDCA साइकिल ये आपको आज यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं. ये जो मेजरमेंट का प्लान डू चेक फॉर द मेजरमेंट आपको यही है ना. प्लान डू PDCA साइकिल प्लान कीजिए, डू ए चेक एंड एक्ट, है ना. कंपनी में बताया गया है, इंडिविजुअल लेवल पे बताया गया है. और दूसरा आपको चार्ट भी आपको बता दिया गया है. केस स्टडी ऑफ ए पर्सन जॉन इज ऑलरेडी स्टेटेड हियर. उसके जो है केस स्टडी भी बता दिया गया है. तो ये PDCA के लिए जो PDCA का डेली गोल चार्ट ऑफ द जॉन ये भी आपको डिस्कस कर दिया गया है. इन क्वेश्चन तो आप बताइए. कोई क्वेश्चन है तो बताइए. ये आपका PDCA साइकिल है. ये कंपनी हाँ कंपनी में आप इंप्लीमेंट कीजिए. ये PDCA आपकी ये आपको इंप्रूवमेंट लाएगा. पर्सनल लेवल पे लाएगा, कंपनी लेवल पे भी लाएगा, डिपार्टमेंट लेवल पे भी लाएगा. और जो इंडियन SME आपको फेलियर हो रहा है और इंडियन पब्लिक सेक्टर जो फेलियर हो रहा है वो उसमें मैनेजर भी अपना ये PDCA साइकिल अपना अडॉप्ट करे. उसका जो आपको जो फेलियर होने का कारण है वो खत्म हो जाएगा, है ना. तो ये आपको इंडियन सिनेरियो में, डेवलपिंग कंट्री के सिनेरियो में
आपको पीडीसीए साइकिल आपको बहुत काम आएगा। ये आपको जो है एक तरह से ये क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के लिए एक तरह से जो है एक जबरदस्त टूल है, जिसको कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं कंपनी में, आप इसको इम्प्रूवमेंट के लिए पीडीसीए साइकिल, है ना। तो जी ये सर। आप पीडीसीए साइकिल जो है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही काम आएगा। जी गुरु जी। तो अब आगे करें कि यही और तक रहने दें? नहीं, इतना इतना ही रहने दीजिए सर। हाँ, इतना ही रहने देते हैं। सर उसका ना मेरे को वो बता देना कि इसका जो फॉर्मेट आएगा एग्जाम का वो कैसे रहेगा। एग्जाम्पल अभी जो एग्जाम जो होंगे तो एमसीक्यू का होंगे। तो एमसीक्यू टेस्ट का जो है मैं डेट जो है आपको बता देता हूँ। अभी कभी कुछ आया नहीं है, कॉलेज की तरफ से भी कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं भी जो है अभी टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो जब कॉलेज के तरफ से आ जाएगा कि इसके कितने एमसीक्यू लेने हैं, क्या करने हैं, तो कोई अभी जो है कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो है कब टेस्ट लेने हैं जो है। तो वो अमित गुप्ता जी वहाँ कॉलेज में कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में बैठे हुए हैं, वही डिसाइड करेंगे जो कब जो है टेस्ट लेना है ना। तो सर वो अमित सर वो तो लेते नहीं है मतलब क्लासेस। क्लासेस नहीं ले रहे अब? क्लासेस तो पहले बीच में बात हुई थी तो बोले क्लास लेनी है, फिर उसके बाद क्लास ही नहीं ली अभी एक भी। अच्छा, इस वीक में भी नहीं ले मैं रहे बात। हो? हैं? जी सर। इस वीक में नहीं ले रहे क्लास वो? अभी तो नहीं लिया सर क्लास कोई। कल तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया था तो वो कुछ जवाब नहीं दिए जो है। और वो परवेज अली जी परवेज सर भी नहीं ले रहे सर क्लास। नहीं ले रहे ना? जी। तो नहीं, मैं पूछता हूँ क्यों क्यों जो है क्यों क्लास नहीं ले रहे। मैं वो बात करता हूँ सर अमित सर से ना एक बार। हाँ, दोनों से बात करिए, दोनों से बात करिए भाई कि आप क्लास क्यों नहीं ले रहे। जी जी जी। क्योंकि ठीक है सर। इसमें सिलेबस नया है, आप देख ही रहे, ये बीटेक लेवल का नहीं है, ये इसमें एडवांस सिलेबस दिया हुआ है। जी सर। वो आप बिना क्लास लिए हुए आपको पल्ले नहीं पड़ेगा ये। जी गुरु जी। हाँ, वो क्योंकि इसकी बुक भी जितने भी रेफरेंस बुक दिए हुए है, एक भी बुक जो है वो मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होती है वो। हम्म। तो इसमें टिक्यू में बुक दी हुई है ना, ऑकलैंड की दी हुई है, जी लॉकस्टिच की सर। दी हुई है, फेगुइन की दी हुई है, बेस्टरफील्ड की दी हुई है, जॉन गिलबर्ट का दिया हुआ है, ये एलन डेरेक का दिया है, वालर जेनी का दिया हुआ है, बुरना एंड्रू का दिया हुआ है। तो ये सारी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, और फिर वो आप आप फंस जाएंगे जो है। जी सर। तो मैं बात करता हूँ सर एक बार ना सर से। हाँ, दोनों से बात कीजिए कि भाई क्यों आप क्लास नहीं ले रहे, आप वजह जी सर। बताइए। ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। लक्ष्य जी आए हुए हैं? लक्ष्य जी ज्वाइन किए हुए हैं? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, ये आपका नाम अलग आ रहा था इसीलिए मैं कह रहा था। तो ठीक है, मैं आज आपका अटेंडेंस बना देता हूँ। ठीक है सर। सर ये नोट्स मिलेंगे इसके? हाँ, नोट्स जहाँ, हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, नोट्स जो हमारे पास तो हैं वो सारे मिल जाएंगे। हाँ सर, बुक तो अवेलेबल नहीं है ना अभी मार्केट में, आप बता रहे थे, तो मैं कह ही रहा नोट से करनी हूँ पड़ेगी प्रिपरेशन। बुक अवेलेबल नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ। हाँ सर, वही कह रहा हूँ मैं, फिर नोट से करनी पड़ेगी ना सर हाँ प्रिपरेशन हाँ तो इसकी हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे लेक्चर नोट्स हैं वो आपके लिए रामबाण है, और उसको हाँ जी अगर सर। वो आपको आप नहीं लिए तो फिर आप फंस जाएंगे वो। ठीक है सर, क्लास तो लेंगे सर, क्लास हाँ हाँ, हनी लेंगे सर। क्लास लीजिए, मैं इसलिए तो कह रहा था, ठीक है सर। इसलिए तो मैं कह रहा था कि वो जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर। ओके। ओके सर।